nearby. No settlement nearby also. Understood? And you can be able to say, like I said, that generally आप इसको वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बैटरी है and then battery you are conserving. So it is the one thing is that directly you have to what? Supply. So there is a what direct supply. यहाँ पे conserve नहीं करेंगे, there is a need to what? It is one of the what I said that one of the drawback of it, direct supply you have to do. You can't conserve. And then when the birds are moving and all through the what I said that their blades they can also fly. So birds they can be. लेकिन पॉजिटिव पॉइंट में आप ये देख सकते हो कि it is I said that it is not releasing. I said that greenhouse gas. It is a renewable source of energy. And केवल there is an I said that initial cost involved. I said that initial cost, but for the few years it will become only what I said that free. So there are some kind of positives are there, some kind of I said that negatives are there. And India in Kutch region we have I said that some in the Kutch region I said that Mandvi. Which one I said that? In the Kutch region we have I said Mandvi, and in the Jamnagar there is an I said that Lamba. Yes. जाम लोग जनरली पीने वाले क्या लगाते हैं, छोटा सा या लंबा लगाते हैं? छोटा सा लगाते हैं जनरली. मैंने बोला लगाने वाले लगाते हैं तो बोलते हैं यार लंबा ही सही है. सो जामनगर आई सेड दैट लांबा एंड में क्या है मांडवी. सो विच आर द टू wind energy station in the Gujarat? I said that Mandvi and Lamba. Can you remember in your mind? Mandvi and Lamba. And which is the atomic energy station we have seen? Kakrapar. Yes, nuclear power plant, atomic power station is I said that which one? In the Surat district. कच्छ में मांडवी. एक लंबा जाम हो गया तो दूसरा कच्छ आ गया ना, बच गया. सो एंड देन विच क्रॉप कॉम्बिनेशन वी हैव सीन हियर? यस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया यहाँ पर. थोड़ा हो गया, बहुत होगा. नंबर 1 गुजरात. अभी जो गुजरात हो गया थोड़ा सा नंबर 1 पे है. गुजरात नंबर 1, सेकंड महाराष्ट्र, एंड फ्यू मार्जिन, फ्यू परसेंट, around 1 or 2% difference is there. And cotton textile industry is in concern. So cotton textile industry, why do the cotton textile industry is growing more in the Gujarat and Maharashtra? Write down the question. Why do cotton textile industry is mostly in Gujarat and Maharashtra? Why do cotton textile industry is mostly in Gujarat and Maharashtra? Yes, हाँ? चलो लिख लो. Along the coast, try it, लिख लो. Second, arid and semi-arid condition. Next लिखोगे arid and semi-arid condition. Yes. Yes. Easy availability of international market and domestic market. International market and which market? Domestic market. Humidity लिख लिया ना? Humidity makes the quality of yarn to be better. Understood?
and then historical aspects, British period में कहाँ पर क्या था हम लोग, we are doing what is in all the merchants are where in the Gujarat and what Maharashtra, and they are doing what is in a and industrial revolution किस में हुआ था, cotton textile, understood, industrial revolution किस में हुआ था, cotton textile, and then they are doing what is in a and who is the raw material reason, who is the raw material reason, Gujarat and Maharashtra. So they are taking raw material from the Gujarat and Maharashtra and producing and then selling into India. Understood? And that time उस समय की बात करा जाए तो 50% कॉटन, जितने भी लोग कपड़े पहनते थे कॉटन का, उसमें से इंडिया का कॉटन 50% होता था. That you can consider that it is this much of what आज के डेट में even then 1/6 or 1/5 people I said that wearing the Indian cotton. I said that, but at that time half of the cotton is of what? India. So historical aspect, understood it? Clear? Now, if I am talking about next factor, the problem faced by cotton textile industry problem. What the problem? General I am talking about for your GS aspect. What the problem the cotton textile industry is facing? Yes. You know that जब आप कॉटन निकालते हो, जब आप कॉटन अपने सीड में से निकालते हो, that is known as ginning. Removing cotton जब उसमें से निकालते हो, GINNING, ginning होता है. That process is known as, I said that ginning. उसके बाद कॉटन निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ, प्रेसिंग. हाँ, प्रेसिंग. लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा नहीं करना, उसके बाद तो निकाल के उसको क्या करना है? What we have done? उससे मुझे क्या मिल गया? स्पिनिंग से यार्न. और यार्न जब बनाते समय क्या होना चाहिए? नियर बाई ह्यूमिडिटी. स्पिनिंग, weaving, ginning and then weaving. Weaving gives us fabric. Weaving हमें क्या देता है? Yes, tell me. What it gives us? Fabric. So I said that spinning and fabric. यदि हम लोग देखा जाए कि yarn, it is mostly in the organized sector. I said that yarn जो है किस सेक्टर में है? In which sector it is? In the organized sector. In which sector I said that? Organized sector. And then Indian yarn quality is very high, very good. Quality of yarn in India it is, I said that. कैसा है? Yarn quality is, I said that, very good. So organized sector है. But weaving is in, I said that, it is organized, and but weaving and that fabric it is in what? Mostly in unorganized. Means if I am talking about three things are there. I said that one it is, I said handloom. Another I said that power looms. Another I said that mills. If earlier handlooms are more, now power loom has started increasing. But आज के डेट में 80% I said that 80% I said that production it is happening through the, which one I said that? Power looms. And then handloom में क्या हो गया? 5%. Then mills it is, I said that 15%. Mills का मतलब होता है there is a what? Less power loom and more handloom. Clear? Less power loom and so when I said that and आज भी हमारा फैब्रिक जो है अनऑर्गेनाइज्ड में है, जिसमें हमारा क्या रहेगा? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? जनरली हैंडलूम टाइप ऑफ, यस और नॉट? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स हैंडलूम टॉप टाइप ऑफ, मिल्स टाइप ऑफ. सो कैसी टेक्नोलॉजी होगी? मशीनरी कैसी होगी? ऑब्सोलिट मशीनरी.
कैसी मशीनरी है, जस्ट टेल मी। एंड देन साथ ही साथ हमारे जो कॉटन जो है, स्टेपल कॉटन, जो इसकी लेंथ क्या है, स्टेपल कॉटन की लेंथ, इट इज आई सेड दैट 1 इंच और 1 इंच टू 1.25। सो स्टेपल जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा थ्रेड की क्या होगी, क्वालिटी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो it is in a first, it is in an unorganized sector, second it is an obsolete machinery, and the third I said that, and then fourth I said that erratic supply of electricity, erratic supply of energy, erratic supply of energy, क्योंकि एनर्जी जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लेबर प्रोडक्टिविटी, पर लेबर प्रोडक्टिविटी विल, जो कि लाइट जाने की वजह से फिर वो नहीं काम करेंगे, सो दैट पर लेबर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। सो मेनी आर देयर, एंड देन अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, नहीं तो अर्लियर दैट इज आई सेड दैट रेगुलर स्ट्राइक्स, दैट दिस इंडस्ट्रीज वर फेसिंग रेगुलर स्ट्राइक, यूनियन बाजी एंड ऑल। So you can, to some extent you can talk about it is an unorganized sector, therefore our fabrics are, इसीलिए हम लोग कहाँ की फैब्रिक्स पहनते हैं, यस जापान, दैन फ्रांस का कह दिया जाए तो वो खरीद के पहन लेते हैं, यूएसए मेड कह दिया जाए तो वो पहन लेते हैं। सो आवर फैब्रिक, बट वो हमारा ही यार्न का हमारे को फैब्रिक बना के दे रहे हैं। सो दे हैव न बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मशीनरीज, एंड दे आर मेकिंग देयर फैब्रिक टू बी व्हाट, सो आवर फैब्रिक इज व्हाट, लो क्वालिटी, बट यार्न इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड। Understood I said that? So therefore, so cotton textile, I said that, लेकिन देखा जाए तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड द लार्जेस्ट फॉरेक्स जो इंडिया को दे रहा है, विच इंडस्ट्री इज गिविंग इन द होल इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, टेक्सटाइल। अंडरस्टूड इट? Forex, whether it is a contribution in the GDP, any industry, if you talk about cotton textile industry is the largest employment provider, largest, I said, the contribution in the GDP, largest contribution in the, I said that, Forex. So it is, and I said that in any industry, if you say the cotton textile industry is the number one in India. So cotton textile we have seen everywhere in the mostly in the coastal proximity, और जब अंदर होगा तो क्या करेंगे, there will be, we have to provide artificial humidifier, and you know the textile industry के लिए सारे factors आपको पता होगा, raw material चाहिए आपको, you need energy, you need, I said that what क्या चाहिए, energy, need, transportation, market and labor। और ये आपको दिल्ली से कौन सा नेशनल, which national highway is coming from Delhi, NH8 6 किसने कहा, NH8 याद है ना, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ठाणे, अब थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ा दूंगा ना, मैं बार बार वही नहीं कहूँगा, ठीक है, एंड देन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ठाणे, यहाँ पे ठाणे, देन देयर इज व्हाट, दिस इज NH, understood? So the Ahmedabad and all the most developed region of this region is under along this NH8 itself. So cotton textile industry is in several places, आपको एक place के जगह नहीं है, everywhere. Woolen textile, जहाँ पर भी energy और ये सारी चीज़ अवेलेबल होंगे, woolen, silk, everything. So you can also write Gujarat है right now. Not only Gujarat is not only in cotton textile industry, but due to better locational factor, in the form of energy, transportation, market, skilled labor, availability of raw material, they are good at several types of industrialization.
and also growing woolen textile, silk textile, etc. अहमदाबाद, वडोदरा, दोनों मिलाकर आसपास के सारे रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन. अहमदाबाद वडोदरा इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन. So woolen textile is also there. There is a silk textile is also there. So everything is there, I say. And then automobile industry के लिए बहुत सारी जगहों पे ऑटोमोबाइल वहाँ पर है, लेकिन ओधाओ में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अहमदाबाद. सो ओधाओ में सबसे बेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द अहमदाबाद. एंड देन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत सारी जगह होंगे. Yes, जहाँ where there is an oil refinery and oil fields and all these things are there, there will be what is a fertilizer industry and all. Understood? So we have finished with what?